सीधे तौर पे जो शुरुआत करते हैं, जो काउंटर स्ट्राइक की जो वीडियोस अभी फिलहाल शेयर की जा रही है, और ये सीधे तौर से आ रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है अगर जंग का ऐलान और शुरुआत हमास की तरफ से की गई है तो उसका खत्म इजराइल करेगा। जंग की जो अगर हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, हमने देखा है लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है और आत्मरक्षा के लिए किस तरीके से आयरन डोम का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है आईडीएफ फोर्सेस, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर जंग की शुरुआत हमास ने करी है तो इजराइल उसे खत्म करेगा। So those pictures that have now been coming in at this point, and several of those hideouts of Hamas that have been bombed, including their intel office or that building that they used to work out from, और ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया और फुल फोर्स में अभी भी लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं जितने भी जो ठिकाने हैं जहां बताया जा रहा है कि हमास के जो आतंकी है वो छुपे बैठे होते हैं या उनके जो इंटेल जो ऑफिसेज होते हैं उनको बर्बाद कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें उड़ा दिया गया और टेल अवीव की तरफ से यह संकल्प लिया गया है कि ये जो टेरर अटैक, ये जो जंग छिड़ी है और हमास की तरफ से छिड़ी, और उसमें बताया जा रहा है कई ऐसे मासूम इजरायली लोग हैं जिनकी जान चली गई है, उन्हें अगवा कर लिया गया है, उसका बदला इजरायल अब लेगा। अब फिलहाल क्या कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, वो आपको एक बार सुना देते हैं। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. अब हमास की तुलना आईसिस से करते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 900 से ज्यादा लोग उनकी जान चली गई, और जहां तक अभी जो तस्वीरें आ रही है उसमें ही जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजा स्ट्रिप से, यानी कि जहां से हमास लगातार जो रॉकेट स्ट्राइक्स करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं उसका जवाब देती हुई नजर आ रही है इजरायल की मिलिट्री, यानी कि आईडीएफ। गाजा स्ट्रिप में अब बताया जा रहा है किस तरीके से वहां पर पूरा एक लॉकडाउन जैसा माहौल बन गया है, जहां पर डिलीवरीज को बंद कर दिया गया है, खाने पीने और फ्यूल की जो सप्लाईज है उसे बंद कर दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहां पे बंद कर दी गई है और पूरे एक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। In a nationally televised address, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that it was just the beginning of a fierce offensive and that will be Israel that ends this war. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. There's still fighting going on in southern Israel. Our troops are still fighting and hunting down the last terrorists that are still inside Israeli territory. We have amassed around 100,000 reserve troops who are currently in southern Israel, preparing to execute the task that the Israeli government has designated the IDF to do.
Our job is to make sure that at the end of this war, Hamas will no longer have any military capabilities to threaten Israeli civilians with. And in addition to that, we are also to make sure that Hamas will not be able to govern the Gaza Strip.